हाँ बिल्कुल। चलिए, ये स्टार्ट। हाँ स्टार्ट हो गया। बोलना ना, मैं टैब म्यूट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है।
और इसकी
Hello, Ankit. Yes, sir. Would you please tell me whether I'm audible or not? Yes, sir, you are audible. Okay. Thank you so much. So, good evening, sir. Good evening, sir. Hi guys, how are you? Yeah, okay. So, shall we start, sir? Okay. So, a very good evening to each and everyone present here. I am Pratyush Mahapatra from 6th semester Computer Science and Engineering, a very proud member of CSI Student Chapter BIT-Durg. And today, CSI BIT-Durg Student Chapter present you with all a very enlightening and a constructive session and a tutorial on UI UX, and welcoming our speaker for today, Mr. Puneet Chawla, sir. So, Sir is a founder at DesignWings, a UI UX designer and a content creator. And also, Sir has a YouTube channel with more than a subscriber count of 105K plus. So, yeah, we welcome you, sir. Sir, how have you been these days? Thank you for inviting me to this lovely event. Yes. I'm doing good, man. It's humid here in Delhi, so if the AC stops working, life stops working here and there. So it's all cool. Really excited to give a little. Yes, sir. Really So, excited to give you guys a little nice little session. You know, should be I've tried to make it nice and crisp for you guys so that especially beginners can kind of get a good understanding of what's going on, and hopefully we can have a nice Q&A session at the end too. definitely, sir. So, yeah, definitely really good to have you, sir, today. And we are definitely going to have an interactive session with sir. And he will be answering all our doubts and queries regarding the designing and creations. So, without much delay, let's start the session, sir. So firstly, are you going to present something or suggest or say some words to our all techno undergrads present here, or then we will proceed with our session ahead? Sir, you are not audible. Yeah, am I Yeah. audible now? Awesome. Yeah, now So I have a nice little PPT prepared for you guys. Even though it's short, it's more hands-on. I want it to be interactive also, so you guys can always go ahead, put stuff in the comments, in the chat, whatever it is. Of course, I'm sure all of you have already heard of the field UX and UI. I'm pretty sure that's why you guys are here to begin with. But UX and UI has transformed into it's borderline mainstream. I'd say another in family gatherings as engineering and medicine. When it comes to how mainstream it is, how many people are coming into it. I'd say in India, the past 5 years have definitely been the golden era, but it's still not over. It still has a lot of potential. There's still a lot of areas to discover inside UX, inside UI. Specialities and specializations that people aren't focusing on, and you'd see a lot of colleges and universities coming into the space as well. You see a lot of private organizations have now a UX or a human computer interaction course, is what they're called. A lot of these colleges are also calling it. So it's slowly start to it's slowly started to become a mainstream college-based, undergraduate degree as of now, as well as a post-grad if people want to get into it. Now, I want to first of all talk about this PPT that I've prepared. I'll just quickly share my screen with you guys. And here we go. Yeah, and yes, I do create all my stuff on Figma, which shouldn't come as a surprise because Figma is one of the most popular UI design tools in the market right now. I'm just quickly going to present this so that you guys can see it a little better. Okay, cool. Let's convert a wireframe to a real UI. Sounds pretty straightforward, and I've
Try to keep it as short and quick as possible so that we can get to a nice little Q&A discussion towards the end as well. Awesome. So the first thing that you guys are seeing here are two words that kind of come across a lot is wireframe and a UI. So quickly gonna look at what these two words really mean. And the reason why I picked this, there's a specific reason as to why I picked this topic today, because user experience design is a very deep understanding of user behavior, of what people require, needs, wants. So doing a hands-on on user experience is generally very lengthy. And for people who don't understand even basic terms, it will go over from here. So it's best that we stick to something which is more visual, which is more easy to kind of do a hands-on with. I hope everything is fine. The audio is good and the video is working fine so that I can move forward from here. Awesome. Sounds good. Cool. So the first thing is a wireframe. So wireframe can be taken as like a blueprint. That's how people try to define it in one word. But at the end of the day, it's not a blueprint, because a blueprint is a complex structure, and it's generally, blueprints. You hear the word blueprints with architects and builders and people like that. And often those blueprints, nobody can understand except the builders and architects themselves. But imagine a 3D model of a, you guys might have a little bit of I have a video issue, so I'll just quickly shut off my video so you guys can still focus on the this presentation here. Cool. So imagine a 3D model of a house. Architects or interior decorators will show you a little 3D model of your house or a little drawing of your house before you either purchase the house or go forward with the interior decorator. They'll show you, okay, this is where the bathroom is, this is where the bedroom is. And you get a good understanding of, okay, this is how everything is structured and this is how everything is planned. And we are okay with this structure. And only then do they sell it to you, or they create a structure, they form a final product for you. So this is very similar to that. So in this case, in when it comes to user interface, it includes the overall layout of either the website, the app. It could literally be the layout of a newspaper. So whatever the product is, the layout and structure for it, the functionality. So, okay, we can say, okay, this website should have a date picker of sorts, So a date picker will look like this, or like maybe like an alarm application should look like this, ideally, So that's that is generally when we look at a layout or like a feature set. We decide what are the features and how they will look before they are formulated or designed moving forward. Then you have things like your interface. So your interface is the things that people will interact with. So interface elements, things like buttons, things like cards and carousels, things like that, which you guys are very well aware of. You guys are, we all are really young, and we can relate to that. There's nothing not relatable in this. Oftentimes a wireframe is designed by a UX designer. So this is where a UX designer and UI designer shake hands, is the wireframing stage. Because a blueprint, for example, as I took the whole builder and architect scenario or interior designer scenario, architect will then give it to the builder or give it to the contractor to actually build the house further on. Architect's not going to lay the bricks out, correct? So similarly, a UX designer is not going to lay out everything, design everything. He's just going to give a rough representation of what the final UI can look like. So that's like a little communication between a UX designer and a UI designer. Now, what the importance of a wireframe is easy. A wireframe will help stakeholders understand everything. So stakeholders could be design managers, okay, developers, product managers, or maybe sometimes even higher ups. Like the CEO might say, okay, I want to look at what's the progress on the website or on the app. So they might show a wireframe just for a basic understanding of, okay, this is like a blueprint we have, and you guys can take a look at what the structure will look like.
Okay, so this is a good, kind of guide for them. Now, when it comes to UI design, a UI design is it's more of a refined interface, and it kind of creates a little bit of a prototype feel. It feels like, okay, this is now getting to a stage where people can really see how it will look when it is in the App Store or in the Play Store, or it's a website, launched website. This is we're going towards the final destination for this product. Now, this could include things like images, icons, colors, type of all that good stuff. Graphic designers know a lot of this because it's more graphical in nature. You apart from that, you also have things like interaction design and creating layouts and grids. Now, these terminologies, I'm sure a lot of you guys are aware of, but if you aren't, no issues. In a short form, I'll explain to you. These are things that users can actually look at. Okay. Now, this is a whole new job. When we say UI designer, a UI designer is completely different from a UX designer. A lot of people call themselves UX UI designers. That means they can do both the UX process as well as the UI process fairly well. So for example, a guy wants to call himself an architect and also has a building firm. So he'll look at both of the areas. No harm in that. So it's something very much similar to that. Now, when we move forward, we'll look at the essential UI design basics. So these are basically, okay, these are terms that you should know just at the beginning. If you don't know these terms, you're probably gonna get confused moving forward. That's the kind of gist that we're going for here. Now, here are a few terms that I want you guys to know just before we begin, like a little hands-on. Color. Color, everybody, of course, knows what color means, but colors represent something else totally different when it comes to this area that we're looking at. Now, color here represents three things. One is the brand's identity. So if you install the Starbucks app, you'll see a green color, the green color represented. If you install Swiggy's app, you'll see orange color represented everywhere. So color really defines, okay, this is this brand's application, or this is this brand's product. Okay. So for example, let's just take Colgate, for example. Colgate, you will always see in red. There'll be red stripes, a red background, so something red behind it. So if you see a Colgate which has a black background, you'll be like, is this even real? Because you're so, it's so closely linked to the brand that you're like, okay, this product is of Colgate because it's red off the top. Very similar is Coca-Cola. If Coca-Cola came in a green packaging, you'll be like, what kind of Coca-Cola is this? So you won't identify it as Coca-Cola to begin with. You'll be confused. So that's one. Number two is color often can help guide users, help guide people. A red color you will often identify with things like warning or, a little, okay, this, if I press this, something bad will happen. Those cartoons back in the days when they used to say, do not press this button. There used to be a big button and it used to say, do not press. The button was always red. It was never green because it was a warning color. So in that sense, it kind of connects to an emotion of the people who are linked to that color. So that's how color is able to guide you through a process. The third thing I believe, which is very close to a UI designer's job, is color represents the state of interaction where the user is. Now, ab hum kehte hain ki interface. Interface is basically you're interacting with something. Okay, so interface could be for anything. Before UI was a job, it used to be, okay, what the interface of this dashboard. That's the kind of words or terminology that people used to use. So user interface is just basically user ka interface kya hai, uske samne kya rakha hua hai. So it defines the status of the user's interface. So it could literally be, you would press a blue button, but you will think a gray button is disabled, So that's the kind of the colors impact
interface of a user, you know. So I think that's really cool to think of. Layout is simple. Layout is how can you make something more accessible, easy to contain in a limited area without having things being, without having a clutter, without having user confused about things. That's what a layout truly means, you know. Typography. Typography is very simple. Typography is defining the nature of the font, defining how a certain a certain heading would look like, or defining how a certain text inside a box will look like. So that is typography. Typography from a graphic design perspective is different, but the basics stay the same of UI typography or poster typography. Everything stays the same. Hierarchy. Hierarchy is saying, okay, the heading should be at the top, then there should be a little subtext at the bottom. How do we know that? How do we know heading should be at the top? Because that is creating a hierarchy. You see the heading first. That is the most important thing, correct? So that is why we put it first. Wo hierarchy defines, you know, the number or the position that a certain element will be, you know, कि हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम अगला क्या पढ़ेंगे, ऐसा, it defines that. Graphics. Graphics are your illustrations, images, icons, logos, things like that. Things that help define something without even saying something. Agar kal ko I show you, I put a cross on my t-shirt, people will think I'm someone who's bad, correct? If I put a tick on my t-shirt, people think I'm someone who's positive, correct? Ab how do you know a cross or a cross sign is bad and a tick mark is good? Because that is what we've been taught since we were kids. You know, that is how we defined things. That is how everything began and evolutionized over time. So graphics also play a major role in helping communicate an idea to people. That's, you know, that is priceless. Cosmetics. अब आप कहोगे यार ये क्या मेकअप की बातें ला रहा है, बकवास कर रहा है. So cosmetics in UI design are the little tweaks, little artistic beautifications made to the user interface to make things look beautiful. You know, it sounds gay, but it's not, trust me. So overall cosmetics are the little beautifications made so that everything looks good, you know, feels good. Interactions. Interactions are आप button दबाते हो, you know, अगर आपने button दबाया कुछ हुआ नहीं, you'll be like, इसको दोबारा दबाना है, क्या करना है? So interactions are basically defining what happens if I press something. Where do I go next if I scroll from here? You know, what if I long press something? Will that happen, or will that make something happen? Can you give example of cosmetics? फटाफट देता हूँ. Example हो गया shadows. अब shadows को आप hierarchy, typography, graphics, इन सब चीजों में आसानी से fit नहीं कर सकते. So that is why cosmetics में shadows आ गई, border radius. You know, nobody needs a 16 pixel border radius, but people still do that. So border पे radius होता है, एकदम sharp नहीं होता, वो भी cosmetic change है. थोड़ा सा आपने border radius बढ़ा दिया, कम कर दिया, ऐसा. So कोई भी चीज अगर आप थोड़ा सा कम ज्यादा करते हो to tweak it, to make it look better, that you can say is kind of cosmetics. एकदम define नहीं कर सकते, कोई scientific इसका definition नहीं दे सकते, but most things which are small changes are coming under cosmetics. Patterns. Pattern क्या होता है boss? English में बोले तो patterns will be things that can repeat themselves and still have the same meaning to it. Okay. हिंदी में बोले तो कोई भी चीज जो आप बार बार करते हो आपको आदत पड़ जाती है ना? तो वैसे ही UI design में भी it's very similar. Anything that you see, you form a meaning to it, and that becomes the identity for it. अब एक बात बताओ, अब Instagram copies TikTok, YouTube copies Instagram. सबने वो अपना shorts, reels वगैरह ले आए हैं कि अच्छा short form content होना चाहिए, जैसे TikTok पे होता है originally. तो अब वो pattern बन गया है, लोगों को short form content देखने का मजा आता है. You know, people will go to YouTube to watch a 60-minute video, but they will come out watching 61-minute videos because, you know, they're bored and they have nothing else to do, but also because it's addictive. Patterns are easy to recognize.
When you see a cross, जैसे मैंने cross का example दिया था, that has become a pattern with us. कि cross है तो बुरा है boss, इसको छूना नहीं. So that's what patterns are. UI patterns can also be defined as things that we can recreate over and over. आपने एक button लगाया, वही button आपने पूरी website पे हर जगह use किया. You will never see कि okay, this button is being used. Okay, this button is being used only in one page. No, you will see one button and you'll see that kind of button is being used all throughout the website, all throughout the application. होता है कि नहीं होता? So that's how it. आप कोई भी ऐप खोल के देख लो, आपको ये समझ आ जाएगा पैटर्न्स का चस्का क्या है इसमें. ठीक है. So I think सबको सारी ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इनका थोड़ा कुछ आइडिया हो गया है. हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं. बट अभी जो मैं हैंड्स ऑन करने जा रहा हूँ उससे सबको अच्छी एक क्लैरिटी मिल जाएगी. अब ये स्क्रीन पता नहीं क्यों ब्लैक हो गई है, बट अच्छा है ब्लैक हो गई है बिकॉज द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस इज हैंड्स ऑन कन्वर्टिंग एन एक्चुअल वायरफ्रेम टू यूआई. अब जिससे पहले वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, एक छोटा सा एक समझा देता हूँ ये 3 पेजेस है क्या. ठीक है. द फर्स्ट पेज इज अ बेसिक वायरफ्रेम. जब हम बोलते हैं ना वायरफ्रेम, तो ये चीज आनी चाहिए दिमाग में. ठीक है. इज अ स्केच. अब वायरफ्रेम मैंने बोला था शुरू में ब्लूप्रिंट जैसा होता है. अब वो ब्लूप्रिंट जैसा आपको सेकंड वाले स्क्रीन में दिख रहा होगा, दैट लिटिल ग्रे स्क्रीन विद लिटिल इमेजेस, ग्रे इमेजेस काइंड ऑफ थिंग. that's the wireframe when we show it to the UI designer or we show it to the stakeholders. जो पहला वाला है ना, वो तब होता है जब आप मीटिंग में बैठे हो, लोगों ने पेन पेंसिल पकड़ी हुई है हाथ में और बस ऐसे स्केच कर रहे हैं, क्या सोचते हो, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो यू जस्ट स्टार्ट स्केचिंग आउट और राइटिंग नोट्स. ऐसा होता है ना, हम क्लास में भी बहुत होता है, या डूडल करते हैं. कोई डूडल पसंद आ गया तो आर्टिस्टिक हो तो शायद आप उस डूडल को कन्वर्ट कर दोगे इनटू पीस ऑफ आर्ट. So you'll see a lot of doodles being converted into actual NFTs and stuff like that. So it's not crazy to see the value of a doodle. So ये आप एक तरीके से doodle की तरह ले सकते हो in a way, even though होता नहीं है but ले सकते हो. अब ये जो है it's just defining next step क्या होगा. next step आपका ये wireframe हो जाता है. हम इंडस्ट्री में इसको हाई-फाई वायरफ्रेम भी कहते हैं, हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम. हाई फिडेलिटी आप लोगों को ये टर्म शायद आपने कहीं सुना हो, पढ़ा हो. दिस इज रिलेटेड टू हम जो बोलते हैं वो बहुत हाई फाई बंदा है यार. मतलब हाई फाई इज बेसिकली समथिंग विच इज अ लिटिल मोर fancier but at the same time more structured, well maintained. These kind of words you kind of connect with high fi. So high fidelity basically means something which has much more visual clarity. जब पहले टाइम में एनिमेशंस होते थे ना, तो जो एनिमेटर्स होते थे एक थोड़ा बेसिक स्केच्ड एनिमेशंस बनाते थे, तो वो वायर फ्रेम की तरह काम आते थे उनके लिए. एंड देन वो हाई फिडेलिटी एनिमेशंस बनाते थे जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर में डाल के पूरा एनिमेशन बनाते थे, मजा आता था. बट दैट वाज हाई फिडेलिटी. द सेम कॉन्सेप्ट गोज ओवर टू दिस एरिया व्हिच इज हाई-फाई डिजाइंस. अब आपको पता है, ये सब समझ आ गया आपको. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नाइस लिटिल हैंड्स ऑन, जहां पे हम ये लाइव इसको कन्वर्ट करके आई विल शो यू, एंड दिस विल गिव यू अ मच बेटर understanding, a much better appreciation of क्या प्रोसेस रहता है. अब मैं एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं दिखाने वाला हूँ. It's going to be very a cappella, very freestyle, but it's going to be a lot of fun. So इस little section में चलते हैं, and इसको मैं थोड़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ अलग से, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियरली एक जगह पे दिखे, है ना. So hopefully सबको दिख रहा होगा, या मुझे दिख रहा है तो सबको दिख रहा होगा. ग्रेट. नाउ ओके, तो अब साइड बाय साइड हमारे पास ऐसे हैं, एंड रियल लाइफ में भी डिजाइनर्स साइड बाय साइड ही रखेंगे, मोर और लेस. ठीक है. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी गोना लुक एट इज योर structure and layout here. The layout has been made pretty well for us. However, we have to see this is like an iOS device. So हम iPhone के या iOS के हिसाब से चलेंगे. ठीक है. तो पहली बात, जो चीज हर जगह सेम रहेगी उस पर फोकस करते हैं. Cool. So what do I mean by that? Now you look at this navigation at the bottom. This navigation will stay the same on all screens. Agreed? Because again, if you go to
दिस ट्रिप सेक्शन, ये बस हाईलाइट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब जो बेसिक वायरफ्रेम होता है, आपको हो सकता है ये आइकन्स ना मिले, लकली हमारे पास ये आइकन्स हैं, तो हम अभी के लिए यही यूज करेंगे, बट हम कुछ बेसिक चीजें ऐड करेंगे। अब अगर हम वापस जाते हैं टू दैट सेक्शन जो हमने देखा था, बेसिक्स, लेट्स स्टार्ट एडिंग दीज बेसिक्स टू आवर डिजाइन हियर, ताकि देख सके कि ये बेसिक्स करते क्या है एक डिजाइन में। सो व्हेन वी से कलर, वी कुड मेंशन वन प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर क्या होता है? प्राइमरी कलर वो होता है जो या तो आपके ब्रांड से लिंक्ड होता है, या तो दैट color will identify the main components on the screen, buttons, tags, highlighted components, things like that. तो वो मजा आता है, वो देखने में मजा आता है, ठीक है। So अब इस explore को हम एक color देंगे। अब for the time being, let's look at a nice little purple. Purple हर चीज के साथ जाता है, so we'll look at a nice little purple. इसका मैं opacity बढ़ा देता हूँ, for some reason it's gone down. Something like this. This looks nice. It looks of a brand only. थोड़ा सा brand का कलर लग रहा है, किसी ब्रांड का कलर हो सकता है। सो ये ब्रांड का कलर आपका हो गया। अब आपके ये जो बाकी सारे हैं, यू कैन, अब जैसे ये है, ये हल्का सा कम ग्रेश है, तो विल मेक श्योर एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट। ये बहुत वैल्यूबल नोट है सबके लिए, इज दैट कंसिस्टेंसी इन एनी डिजाइन इज की। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि मान लो कि ये आइकन यहां पे ऐसा लग रहा है, कहीं और कुछ और लगे, अजीब नहीं लगेगा, इट विल थ्रो यू ऑफ। So to make sure that the user is confident of his choices, is confident that the same thing is being displayed, and it's easier to use, consistency is important. ठीक? So now everything is grayed out, only this one is here. That means कि ये highlighted है और ये सारी चीजें highlighted नहीं है, मतलब ये अभी काम में नहीं आ रही। हमने एक और क्या कॉन्सेप्ट देखा था, हायरार्की। So this is not necessarily a this is more of a visual hierarchy than a a layout based hierarchy, or a normal hierarchy of the number or the position hierarchy. Okay, so यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि explore selected है without us having to change anything in anything. यहाँ पे बस सिर्फ हमने कलर दिया है, और सिर्फ कलर से हमारा प्राइमरी मोटिव या प्राइमरी सब्जेक्ट यहाँ समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारे लिए अभी कंप्लीट हो गया है, बिकॉज हमने पहली एक चीज देख ली है। सो हमारा लेआउट रेडी था ऑलरेडी, हमारा कलर रेडी हो गया है बिकॉज ऑफ द प्राइमरी कलर हियर। टाइपोग्राफी वी कैन वर्क ऑन। सो टाइपोग्राफी वी कैन चूज एनी टाइप फ्रॉम हियर, एनी फॉन्ट फैमिली दैट यू लाइक। नाउ दो तीन तरीके के टाइप्स होते हैं। एक आपका ये जनरल जो आप एप्स में देखते हो, इनको सैंस सेरिफ कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी, जैसे आप ननीटो या कोई भी आप फॉन्ट सर्च करोगे, वो ऐसे होंगे जिसमें स्ट्रेट, सब कुछ स्ट्रेट होगा। अब अगर जैसे मान लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन, सबने सुना होगा, आप सब लोगों ने कॉलेज में प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा। तो अगर आपके पास टाइम्स न्यू रोमन देखते हैं, ये ऐड क्यों नहीं हो रहा फॉर सम रीजन, या तो हमारे पास टाइम्स है नहीं। लेट्स सी, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, बट लेट्स सी ये क्यों नहीं हो रहा। ओके, आई थिंक बिकॉज दिस इज एन इंस्टेंस, वी विल जस्ट, ये सब अभी सोचने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट लर्निंग द बेसिक्स। सो ये आपका इंस्टेंस है एंड ये आपका फॉन्ट है, ठीक है। तो आपका अब आ जाना चाहिए। हाँ, सो ये जो आपके ये शार्प एजेस दिख रहे हैं आपको, इसमें जैसे ये शार्प एजेस हैं, ये स्टाइलिस्टिक शार्प एजेस दिख रहे हैं, इनको आप सेरिफ कहते हो। ये सेरिफ्स होते हैं, ये जो सिर्फ आपके शार्प एज है ना, ये यहाँ पे, ये आपका सेरिफ है, जहाँ पे रेड लाइन है, ये जहाँ पे मेरा ये। अब अगर मैं इस सेरिफ को हटा दूंगा, माने कि अगर मैं सैंस सेरिफ कोई फॉन्ट चूज करता हूँ जो अभी था हमारे पास, हट गया ना वो स्टाइल, वो ऐसा एज था, एक शार्प पॉइंटेड थिंग था, तो वो सेरिफ होता है, उसको, उस पॉइंटेड थिंग को सेरिफ कहते हैं। सो एनी फॉन्ट विच हैज सेरिफ एट द एंड और हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेरिफ, इट विल बी लाइक दैट। ये वर्क सैंस है, तो ये सिर्फ सैंस सेरिफ है। तो सैंस मतलब, सैंस इन इंग्लिश मीन्स विदाउट समथिंग, सो सैंस मीन्स विदाउट दैट सेरिफ इज सैंस सेरिफ। सिंपल इंग्लिश। सो आपका ये एक टाइप भी सिखा दिया मैंने आपको, थोड़ा सा छोटा सा। तो आपका ये टाइप, यहाँ पे टाइपोग्राफी हमने सेलेक्ट करी, विच इज वर्क सैंस। नाउ इन एन एप्लीकेशन वी विल यूज 1 to 2 font faces or types. Okay, we will not use anything more than that.
Reason being, it creates inconsistency as well as it creates a lot of ruckus. You know, आपको पता नहीं चलेगा, अरे इस पेज पे ये ऐसा लिखा हुआ है, वो वैसा लिखा हुआ है, सारा स्टाइल अलग है. मतलब आप ही सोचो, एक पोस्टर इमेजिन करो और उस पोस्टर पे 15-20 फॉन्ट लगे हुए हैं. क्या सोचोगे आप? दिस इज अ मेस. दैट्स द फर्स्ट रिएक्शन यू हैव. सो टू क्रिएट लेस ऑफ अ मेस, वी आर गोना स्टिक टू 1 to 2 fonts. ओके, सो दैट्स अ रूल लेके चलो. अब हमने हायरार्की देख ली, टाइप देख लिया, ग्राफिक्स. आपके आइकन्स जो हैं यहाँ पे ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं. ठीक है, आइकन्स, लोगोस, जो भी कहेंगे. कॉस्मेटिक्स. अब अगर मैं मान लो इस नेविगेशन बार को हल्का सा शैडो दे दूं ताकि ऐसा लगे कि ये उठा हुआ है. कहते हैं ना ऐसा, हिंदी में हम कहते हैं उठा हुआ है. तो वो ये चीज उसी के लिए शैडो. अगर मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दूं माइनस, एंड ज्यादा ही उठ गया यार. ठीक है, बट यू गेट द जिस्ट ऑफ इट. इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ. हाँ, अब जैसे ये शैडो है, लग रहा है ना कि थोड़ा डेप्थ ऐड हो गया है टू द इंटायर इंटरफेस. अब ये डेप्थ ऐड करने के लिए ही हमने ये शैडो किया है. तो ये कॉस्मेटिक चेंज है. इट्स अ वेरी लिटिल विजुअल चेंज दैट इज बीइंग मेड. इसको हटा के हमारे इंटरफेस में कुछ फर्क नहीं आना चाहिए. दैट्स द होल मीनिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स. ठीक है, अब आपका कॉस्मेटिक हो गया सब. आई थिंक इट्स वेरी, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल फॉर यू गाइस. इंटरैक्शन. अब मान लेते हैं मैं वापस यहाँ फिग्मा में आया, यहाँ पे वापस आया और इसको मैंने हल्का सा लिफ्ट दे दिया. ठीक है, पहले मैं ना इसको कंपोनेंट देख लेता हूँ. ठीक है, तो अब मान लेते हैं मैंने इसको कुछ थोड़ा सा इंस्टेंस इसके चेंज कर देता हूँ बस. हाँ, ठीक है, इसका ऑटो लेआउट हटा के इसको थोड़ा ऊपर लिफ्ट कर देता हूँ. ऊप, ज्यादा हो गया. तो मान लेते हैं कि मेरा ये स्टेट है नेचुरल और ये थोड़ा ऊपर है, लिफ्ट हुआ हुआ. तो जब हम एनिमेट करेंगे, लेट्स डू अ क्विक एनिमेशन. थोड़ा इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं ना बस ऑन द स्पॉट. तो मान 2 स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं अभी के लिए. देयर आर इजियर मेथड्स ऑफ डूइंग दिस, बट क्विकर ये है. तो एक मैंने प्रोटोटाइप क्रिएट कर दिया. ये ध्यान मत दो, भूल जाओ ये मैंने किया. ये अगर आपने ये सॉफ्टवेयर सीखे नहीं है तो आपको पता नहीं चलेंगे, बट मान लो कि बहुत सिंपल चीज है. ठीक है, यहां से मैं प्ले करूंगा. आपका आ गया ना. अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूं, अरे अच्छा, ये पहले से लिफ्टेड है. ठीक है, इसको पहले मैं लिफ्ट कर दूं थोड़ा सा. हाँ, अब मैं इसको वापस प्ले करता हूं तो क्लिक करने पे कैसे लिफ्ट हो रहा है आपने देखा होगा. फिर से जस्ट फोकस ऑन दिस लिटिल थिंग एट द बॉटम, है ना. होपफुली आप देख सकते हो. हाँ, देख सकते हो. ग्रेट. तो ये जो चीज है ये आपका एक छोटा सा इंटरैक्शन है. आप कोई जरूरत नहीं थी इसको प्रेस करने पे ये इंटरैक्शन होने की, बट इट एड्स सेंटिमेंट ऑफ अच्छा ये चीज हिली है, मतलब इसको प्रेस करके कुछ हुआ है. ये इंटरैक्शन होता है. हिंदी में बोले तो ऐसा, बट इन इंग्लिश इट्स मोर लाइक, ओके, इफ आई प्रेस समथिंग एंड अ रिएक्शन शुड अकर. साइंस स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड वो एक्शन वर्सेस रिएक्शन वाला, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सेम चीज आपका इंटरफेस में भी होना चाहिए, है ना. इफ यू प्रेस अ बटन इन रियल लाइफ, इट शुड हैव सम प्रेस एनिमेशन. कुछ ऐसा दबाओगे तो बटन अंदर चले जाएगा, कुछ साइड में हो जाएगा. स्विच दबाओगे तो स्विच ऊपर से नीचे आएगा. मान लो स्विच फ्लैट होता और कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता प्रेस करने से, अजीब नहीं लगता कि भाई प्रेस ऑन भी है कि ऑफ है. सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट, to give a better clarity to the user that something has moved, something has happened, there is interaction. ये आपका एक बढ़िया एग्जाम्पल हो गया ऑफ इंटरैक्शन. अब नाउ वी विल लुक एट अनदर कॉन्सेप्ट. इसको मैं पहले वापस से चालू करता हूँ बिकॉज वी शट दिस डाउन. कूल. सो दिस इज all of the things. Your pattern would be this navigation can be used anywhere, and this is the navigation most applications are using. So that's a pattern. People are used to this kind of navigation. हो गया ना. सारे कॉन्सेप्ट्स एक छोटे नेविगेशन के साथ क्लियर हो गए बेसिकली. नहीं होंगे तो कोई बात नहीं. इट्स अ वेरी इजी थिंग. यू कैन हैव अ लुक एट इट लेटर ऑल्सो. अब फटाफट एक आध और एलिमेंट्स को हम ट्वीक अराउंड करते हैं ताकि हम एक अच्छा सा Q&A राउंड भी रखें. सो एक मैं I'll just copy this. Ideally you might design things from scratch, but अभी के लिए we're just copying this. ठीक है. So पहले अब आते हैं इमेजेस पे. अब क्या है कि मान लेते हैं कि एक इमेज है जिसमें सब कुछ व्हाइट हुआ है. अब इमेजेस
एक इंटरफेस में इंपॉर्टेंट क्यों होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा एक सेकंड में, ठीक है। अभी एक इमेज प्लेस होल्डर इन्होंने बना रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक एक्चुअल इमेज लेयर डालता हूँ। अभी ये समझो मत, ये देखो मत ज्यादा, मैं बस कर रहा हूँ, बस फाइनल रिजल्ट देखना, ठीक है। अब कोई मैं अनस्प्लैश का प्लगइन चला देता हूँ, एंड अनस्प्लैश, आई एम श्योर यू गाइस हैव हर्ड ऑफ इट। इट्स लाइक अ यू नो रॉयल्टी फ्री लाइब्रेरी ऑफ इमेजेस। कोई एनिमल की इमेज लगा देते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली नॉट एनिमल, एक कोई स्नो की इमेज लगाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि स्नो की इमेज व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट हियर की लगाता हूं, देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्रेट। अब एक बात बताओ, ये स्नो की इमेज है बट यहां पे कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन इमेज एंड द टाइटल। मान लेते हैं यहां पे ये ग्रे हटा देते हैं, ठीक है, ग्रे हटा देते हैं अभी के लिए। ये जो ग्रे बैकग्राउंड दिया हुआ है ना, इसको दिख रहा है अब आप लोगों को? टेक्स्ट दिख रहा है इसके ऊपर? भाई मुझे तो नहीं दिख रहा, अगर आपको दिख रहा है तो बहुत ही अमेजिंग आई साइट है। बट टेल मी इन द चैट, टेल मी इन द चैट इफ यू कैन सी द टेक्स्ट नाउ। I'm sure, I wear glasses, so I'm sure my eyesight is pretty shitty. Nothing is visible. है ना, nothing is really visible. अब मान लो ये रियल लाइफ में ऐसा हुआ होता तो आपका ऐप ही ब्रेक हो जाता। अगर किसी को यहाँ पे प्राइस लिखना होता तो वो देख ही नहीं पाता। ये ओरिजिनली भी शायद ये प्राइस ही है ना, हाँ देखो प्राइस है। तो अगर प्राइस नहीं दिखता तो यूजर क्या कहता, भाई ये फ्री है क्या? सो वही है कि कोई भी ऐसा केस हो कि इमेज डिजाइन को खराब ही कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाई लुकिंग एट इमेजेस इन इंटरफेस इज इंपॉर्टेंट, पुटिंग रियल लाइफ इमेजेस इज इंपॉर्टेंट। बहुत लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। UI world में what people do is it's a lot of fun, but a lot of designers make this mistake, especially beginners. मान लेते हैं मैंने ऐसा कोई इमेज डाल रखी है, ठीक है, बढ़िया फॉक्स की इमेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं 100% भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कम भी कर देता हूँ ना, अगर मेरा ओपेसिटी किसी रीजन से कम भी हो जाती है ना, तब भी क्लियरली दिखता है। देखो अगर मैं इसको ग्रे भी हटा दूंगा ना, तब भी हल्का हल्का दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं बहुत ही, अब देखो आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ओपेसिटी कम करने में भी। अब ओपेसिटी बढ़ा रहा हूं तो बढ़िया है, बट अगर इसका व्हाइट बैकग्राउंड होता तो ओपेसिटी कम ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये व्हाइट छिप जाता। दैट इज व्हाई दिस डिजाइनर इज स्मार्ट इनफ टू क्रिएट अ वायरफ्रेम विथ अ बैकग्राउंड इन द प्राइस। बहुत डिजाइनर्स क्या करेंगे, ये बैकग्राउंड हटा देंगे, अरे मिनिमल नहीं लग रहा बॉस, ये सुनने को मिलेगा, अरे मिनिमल गया भाड़ में यार। यूजेबिलिटी, this is a term, don't focus on the term, just understand कि usability is some very important। क्या यूज करने में आसान है, क्या यूजर को सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, चाहे कैसी भी इमेज हो, कैसा भी कुछ हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। सो ये इसको हटा देते हैं, जो हमारा दोस्त बंधु है यहाँ पे, ठीक है, ऑसम। तो बिना किसी चीज के आपको अच्छा दिख रहा है, बट ये इमेज हमें यूज करनी नहीं है, हमें यूज करनी थी व्हाइट वाली इमेज, ताकि वी कैन लुक एट द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जांपल्स। ये आ गई ना आपकी इमेज। अब इसको ज्यादा बढ़ा दूंगा तो शायद थोड़ा विजिबल होगा, बट फिर भी ना ये व्हाइट के ऊपर व्हाइट, अगर किसी की आइस अभी भी बहुत स्क्विंट करने पे दिखेगा। अभी तो मैं जूम्ड इन हूं, आप ऐसा फोन ऐसे देख रहे होगे कतई नहीं दिखेगा आपको प्राइस, ठीक है ना। तो आपका ये ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब जाके ये बैकग्राउंड मेक्स सेंस, देयर इज लॉजिक टू दिस बैकग्राउंड, ओके। Otherwise, if you don't want to interrupt the image, मान लेते हैं, you will place this somewhere else and give this a slightly different color, है ना, है ना, perfect, कोई दिक्कत नहीं, nothing's being broken। अब ये आपका इमेज की इंपॉर्टेंस है इन UI डिजाइन। वी नाउ हैव दिस इमेज एंड यहाँ पे ये भी जो है ना, इसको अभी मान लेते हैं कॉस्मेटिक चेंज कर सकते हैं, जिससे ये आपका विजिबल ज्यादा रहे इसके ऊपर, चाहे व्हाइट हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो। इफेक्ट के अंदर आपका जो शैडोज होते हैं ना, एक डीपर डार्कर शैडो विल अलाउ यू टू सी। अब ये हमारा दोस्त जो है, हाँ अब हुआ है, ओके। ये जो हमने शैडो दे दी, इससे हमने थोड़ा ब्लर भी कर दिया तो थोड़ा बहुत ज्यादा शार्प ना लगे। शैडो दे दी है बढ़िया सी, कम भी कर सकते हैं एक्चुअली इसका जो है ना, ये वाला शैडो से थोड़ा और विजुअल क्लैरिटी आ रही है। ये शैडो जो है, अगर अब शैडो को मैं अगर हटा दूं, फटाफट हटा के देखते हैं, अब कम है ना, इसको बिल्कुल शैडो हटा देते हैं। अब देखो एकदम कम है, शैडो थोड़ी सी भी आई तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई इसमें।
तो अब ये जो बहुत सारे आपको वेबसाइट्स वगैरह पे शैडो दिखेगा किसी चीज के पीछे, दैट इज कॉस्मेटिक चेंज टू मेक श्योर देयर इज विजुअल क्लैरिटी होनी चाहिए बॉस. सो दैट इज योर यूआई हियर. हम टाइप में क्या यूज करेंगे? वर्क सैंस, क्योंकि वर्क सैंस इज द प्राइमरी टाइप वी आर यूजिंग ऑल अक्रॉस आवर ऐप एंड आइडली ऑल अक्रॉस. अब ये हमने वो कर रखा है ना, अटैच करेंगे इंस्टेंस को, तब जाके ये चेंज होगा. तो ऑल अक्रॉस द ऐप, वेबसाइट, एवरीथिंग, आइडियली एक या दो फॉन्ट्स ही रहेंगे. उन्हीं फॉन्ट्स को आप एक ब्रांड बुक में भी डालोगे, आप गाइडलाइंस और लाइब्रेरी में भी डालोगे, हर जगह वो फॉन्ट आ जाएगा, है ना. आई थिंक दैट्स द फॉर द बेस्ट, बिकॉज एट द एंड इट क्रिएट्स अ हार्मनी. एक हार्मनी हो जाती है ना, हर चीज अगर एक जैसी हो तो सही भी लगता है कि यार नथिंग्स आउट ऑफ योर प्लेस, कोई ओसीडी नहीं हो रही है किसी को, है ना. सो ये सब देखो, हाउ मच डिफरेंस, लिटिल बिट ऑफ टाइप, correction of type, a little bit of correction of elements has brought to it. It's gotten so close to the final product. अब इसने why is this a, अब लोग पूछेंगे यार ये राउंडेड बॉर्डर क्यों करते हैं हम, इसको शार्प भी तो कर सकते हैं. अगर मैं इसका राउंडेड बॉर्डर हटा दूं, बुरा तो नहीं लग रहा, इसको भी मैं हटा दूंगा, बुरा तो नहीं लग रहा, अच्छा भला लग रहा है. बहुत साइट्स पे आपको ऐसा भी दिखेगा. नाउ अ शार्प एज mostly identifies a more professional, more serious outlook. ठीक है. अब आप मान लेते हैं एक I'll open a quick screen यहाँ पे and you'll get the example एक second में. That's how fun it's going to be. Let me put a old English book. जो पुराने टाइम में होती थी ना आपकी, जो लाइब्रेरीज में अभी भी पड़ी होती है, धूल खा रही होती है, एक वो ले आते हैं एक एग्जाम्पल के लिए. ठीक है. एक एग्जाम्पल ये दिख गया ना, ये दिख गया, बढ़िया. इसको मैं यहीं पे फिग्मा में चढ़ा देता हूँ, लोगों को पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा. हाँ, ये देखो, ये इमेज मैं ले आया हूँ. अब ये देख रहे हो आप, ये सबकी जो एजेस है ना, मोर लेस शार्प है. वो पुरानी हो गई हैं तो ये देखो ऐसा खुदेड़ गई हैं, बट इट्स मोर लेस स्ट्रेट एंड शार्प. ठीक है. ये वाली बुक देखो स्पेसिफिकली, जो बहुत सीरियस दिख रही है, एकदम शार्प है. इसके पेजेस भी समझ लो शार्प ही होंगे, सीधे होते हैं एकदम. अब मैं सेम टाइम पे, आप लोग आप कहोगे इसमें क्या है भाई, सारी बुक्स ऐसे होती हैं. आई विल शो यू व्हाट द डिफरेंस इज. चिल्ड्रंस बुक, नाउ यू विल सी द डिफरेंस. एक ले आता हूँ, बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिख गए हैं, बट एक रियल लाइफ बुक चाहिए. ये तो इमेजेस हैं. चिल्ड्रंस बुक, ये एक अच्छा एग्जांपल होगा एक्चुअली चिल्ड्रंस बुक का. ये कॉपी हो जा. ओके. There's so many covers but very few actual children's book जो इन्होंने physically दिखाई हैं. But ये एक अच्छा एग्जांपल है सिर्फ दिखाने के लिए. हाँ, but you'll find a lot more examples in the real world. A trip to the zoo. ठीक है. अब ये जो है, अब एक बात बताओ, कौन सी ज्यादा मजेदार लग रही है? ऑन द लेफ्ट इज दैट, डज दैट लुक मोर फन टू यू, और द राइट वन लुक मोर फन, प्लेफुल टू यू? I want to know in the chat real quick, left or right? So the right one looks a bit more fun, but the left one is look like a bit professional. है ना, easy to identify what's the the difference, the properties. Absolutely correct. So ये आपका प्लेफुल है, ये आपका. तो अगर आपका कोई वेबसाइट है जो एकदम, मतलब मान लो कोई आप किसी लॉयर के लिए वेबसाइट बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग अ वेबसाइट फॉर अ लॉयर, you will create a website without rounded corners, flashy colors. You will skip over that. Why? Because it doesn't look professional. अब ये हम rounded corners एक और reason के लिए भी करते हैं, जो बहुत designers को नहीं पता चलता, especially beginners को नहीं, is that remember the old time cartoons we used to all watch? No, not all of you watch, but like 90s kids used to watch, of course. आपके कोई भी यार 90s कार्टून उठा लो, या 90s से पहले 80s वाले कार्टून उठा लो यार. मिकी, जो ब्लैक एंड व्हाइट मिकी माउस है, वहां से आपका जो एनिमेशन स्टार्ट हुई थी, मेन स्ट्रीम एनिमेशन, आई वोंट कॉल इट फर्स्ट एनिमेशन, बट मेन स्ट्रीम एनिमेशन was Mickey Mouse. The most renowned, recognizable creatures on the planet is Mickey Mouse.
ठीक है, अब इसका मैं यहाँ पे ले आके दिखाता हूँ वाई राउंडेड कॉर्नर्स. This was the first time, one of the first times that everything in a cartoon was rounded. From its hands to its nose to its eyes to its ears to its, यहाँ पे व्हील भी देख रहे हो, एक भी शार्प एज नहीं, यहाँ पे एक शार्प एज दिख गया, वो नहीं बड़ी बात है, बट एक शार्प एज दिख गया, बट बाकी सारे एजेस आप देखोगे वर ऑल राउंडेड. इसके बटन्स स्क्वायर क्यों नहीं है? Why are the buttons not square? Because children react better to rounded objects, balls, balloons. एक बच्चे के हाथ में नाइफ थमा के देखो, उसके पेरेंट्स भी डर जाएंगे यार. तो a sharp object is often linked to dangerous, deadly, ruthless. A rounded object is always more friendlier in nature. That is why we use rounded corners most of the time. That is the actual psychological reason behind it, including these serious things that we spoke about. So ये आपका rounded corners हो गए हमने जो add किए हैं, and already looks really good. In a lot of cases, I might give this a little bit of a shadow to give this a little more depth. अब फटाफट दे रहा हूँ, इसको ऐसा जज मत करना, ये shadow बढ़िया नहीं लग रही, but little bit of a shadow, just so that there's a little bit of. अब हायरार्की की बात आ गई, एक फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर कार्ड है ना, अब इसको शैडो को हटा दूं, शैडो स्ट्रोक सबको हटा दूं, गायब हो गया. अब बहुत सारी वेबसाइट्स में आप देखोगे गायब ही रखते हैं. दैट इज टू इम्प्रूव द होल मिनिमलिस्टिक अप्रोच. वो मिनिमलिस्टिक अप्रोच होती है ना, कुछ एजेस नहीं है, कुछ डार्क नहीं है, सब बस ऐसे क्लियर स्काई में सब कुछ छोड़ा हुआ है. अब इस एग्जाम्पल के साथ दिस वुड बी अ गुड थिंग. यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज focused on the images, and the images naturally create this hierarchy. अच्छा, ये image start हो रही है, मतलब ये नया डब्बा है, है ना? So that is why the cards identify differently, because there is an image. If there was no image, what would you make of this? Tell me. ऐसा लग रहा है कि इसी image के दो वो हैं, which is not true. So we need to make sure that there's a hierarchy, and just removing that one element can ruin our hierarchy altogether, है ना? So I think this is quite clear to you guys. Yeah, I'm just trying to explain through a hands-on, है ना? अब एक लास्ट चीज करते हैं, just then we'll move on to the Q&A, है ना? आप सब लोगों को भी मजा आएगा. ये हो गया. अब अपना महान सर्च बार करते हैं. अब सर्च बार में हम एक छोटा सा इंटरेक्शन भी लगाएंगे, ठीक है? Then it will become like a well-rounded interface, है ना? Because if you made in today's time, if you made an interface which was boring and nothing happened on screen, you'll be like, boss कुछ हो क्यों नहीं रहा है? It'll look boring, it'll look stagnant. वो नहीं चाहते हम कभी भी होना. Interfaces should look interesting. So adding a little bit of playfulness, fun, things working around should be added. अब एक काम करते हैं, बहुत मजा आएगा इसको बनाने में. एक छोटा सा ना यहाँ पे ऊपर की जगह, अभी यूआई डिजाइनर कहेगा बॉस ये स्ट्रक्चर सही है, बट आई वांट टू रिप्रेजेंट इट डिफरेंटली. कैसे करेगा? एक यहाँ पे छोटा सा सर्च आइकन बना देते हैं, बहुत कूल लगेगा. व्हाइट भी कर देते हैं क्योंकि इट्स द होल थीम इज लाइक दैट. थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते, ग्रे एकदम. हाँ देखा, अच्छा सा बटन बन गया ना. 1 सेकंड लगा यार हमें, कितना छोटे टाइम में हो गया. ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से आपका ये टाइमिंग भी ठीक हो जाएगी कि फटाफट क्यों नहीं बन रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है बनाने में. इसको मैं बना देता हूँ, एंड लेट मी जस्ट आउटलाइन दिस. तो आपका एक आइकन भी तैयार हो गया. ये हैक्स जो होते हैं ना, ओवर द इयर्स आ जाते हैं लोगों को. सो आपका ये आइकन रेडी हो गया, बढ़िया है. इसको मैं कलर भी दे दिया, आपका सो कॉल्ड ब्रांड कलर जो हमने एकदम ऐसे ही रैंडमली पिक कर दिया है. ओहो, हो गया ना आपका. तो ये आपका आइकन आ गया. आपको फिर भी हायरार्की ठीक लग रही है, कुछ दिक्कत नहीं लग रही है. वी डोंट, इट्स नॉट टेकिंग अवे आवर फोकस. ओके, सो आपका ये बन गया है. वी कैन मे बी मेक इट स्लाइटली स्मॉलर सो दैट इट डजंट रियली टेक अवे फ्रॉम एनीथिंग. तो यहाँ पे एक ऐड बटन, एक्चुअली मैंने गलती कर दी, आई एडमिट इट. इट शुड हैव बीन अ सर्च आइकन. तो सर्च के लिए हम एक फटाक से फेदर आइकन्स खोल लेते हैं. फेदर आइकन्स आई लाइक, आप कोई भी आइकन यूज कर सकते हो. सर्च आ गया ये अंदर यहाँ पे ना. इसको छोटा कर देंगे हम, छोटा सा आइकन. एकदम ASMR वाली फील आ रही है अभी. बट इसको हमने यहाँ लगा दिया. ग्रेट.
ओके ग्रेट, बढ़िया। तो अब क्या करेंगे कि ये हमारा ब्रांड कलर आ गया, एक सर्च आ गया। अब एक क्विक इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे। जब ये आप सर्च पे प्रेस करोगे ना तो एक बाउंस इफेक्ट आएगा और ये चीजें नीचे चली जाएंगी थोड़ी सी ना, और यहाँ पे ऊपर एक सर्च का बार आ जाएगा, इसमें आप सर्च कर सकते हो। नीचे से कीबोर्ड भी आएगा, हाँ ये भी याद रखना। ये आपका वाइट आ गया, इसमें हमने शैडो भी दे दिया, एक अच्छा सा डेप्थ क्रिएट हो गया यहाँ पे। एंड इसको हम एकदम ऊपर ले आएंगे, एकदम उड़ा देंगे ऊपर तो ऐसा लगेगा कि उड़ के ऊपर चला गया है ना। देखा गया, इट्स लाइक डूइंग कोरियोग्राफी फॉर डांस, ऐसा एकदम हारमोनी में सब होता है। यहाँ पे हमने एक और लगा दिया क्योंकि ये थोड़ा सेपरेट रहेगा इसके साथ हमारा, यहाँ पे बॉक्स के साथ, है ना। ये आपका आ गया एंड दिस इज लुकिंग सो गुड ऑलरेडी मैन। बढ़िया आ गया आपका, और यहाँ पे लिख दोगे आप टाइप टू सर्च या फिर स्टार्ट टाइपिंग टू सर्च। अब ये यूआई डिजाइन वर्ल्ड में बहुत शुरू में बात तो नहीं करते, बट बाद में इंपॉर्टेंस पता लगता है इसका। व्हाट इज स्टार्ट टाइपिंग टू सर्च, क्या है बॉस? Why are we writing like this? Now the reason we write like this is because it creates a sense of casualness and easy to use. So अब अगर यहाँ पे कीबोर्ड आता है, we'll imagine there's a keyboard, अब वो कीबोर्ड कॉपी करना पड़ेगा, but we'll imagine there's a keyboard, तो आपको लगेगा कि अच्छा मैं टाइप करना शुरू करता हूँ। अगर ये टेक्स्ट नहीं होता, मान लेते हैं ब्लैंक होता, तो आप कहते हैं भाई कहाँ आएगा टेक्स्ट, यू नो। सो ये जो टेक्स्ट होता है, ये जो कंटेंट होता है, it plays an important role in communicating directly to the user what you should do, what you shouldn't do. You know, that this is a great way to define the importance of content in UI design. ये जो कंटेंट है ये तो खैर रहेगा, ये तो इसके बिना तो अब ये क्या प्रोडक्ट है भाई, ये क्या चीज खरीद रहा हूं मैं। I'm sure you won't be buying hills for like $6, but you get the gist of it. तो वही है कि content will identify a lot of different things. इस केस में आपका एक्शन को इट्स प्रमोटिंग एन एक्शन हियर, इजंट इट फन। अब मैंने इसको ग्रुप कर दिया है और इसको मैं पहले वाले इसमें ले जाऊंगा और इसको ऊपर फेंक दूंगा, एकदम हटा दूंगा थोड़ा, है ना। तो अब जब एनिमेट होगा तो ऊपर से स्लाइड इन होके आएगा। आई थिंक यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट, क्यों मैंने किया ये समझ आ जाएगा जब प्रोटोटाइप होगा। फाइनल प्रोटोटाइप ये बन गया। अब इसको नेविगेट करते हैं, स्मार्ट एनिमेशन, ईज इन आउट। ईज इन आउट इज द मोस्ट easy to use, well defined thing. You can even use things like gentle, quick, bouncy, whatever you like. But अभी आसान करने के लिए 200 milliseconds फटाक से होना चाहिए या जल्दी होना चाहिए। This is in milliseconds, okay? 1000 milliseconds means 1 second, okay? So we'll do like 300 for now. बाद में tweak भी कर सकते हैं यार, कोई जल्दी थोड़ी ना है। अभी मैं कर देता हूँ 400, ठीक है। अब ये आपका एनिमेशन आ गया, हो गया ना बढ़िया। तो जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा यहां जाना चाहिए। अब विल लुक एट द फ्लो ना। अब मैं इसको क्लिक करूं, आ गया ना, स्लाइड इन हुआ ना ये। अब ऑफ कोर्स दिस इज अ क्विक एनिमेशन, बहुत फाइन ट्यूनिंग हो सकती थी इसमें, बट यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। इसमें मजा आया, स्लाइड इन हुआ तो इंटरफेस भी लगा कि अच्छा कुछ हो रहा है भाई स्क्रीन पे। मान लो कि वो बस ऊपर से आ जाता तो आप देखते रहते भाई ये कहाँ, और ये यहीं रहता तो आप देखते रहते कि कहाँ गया भाई, यू नो। सो this is coming, everything is coordinated, this is proper, you know, you're creating micro interactions. This I would define as a micro interaction to display something like this. ना micro interaction simple English है, simple English, micro मतलब छोटा, small interaction, okay? So ये आपका एक तरीके से मैंने define कर दिया all the basics and basic principles of UI design जो हम day to day basis पे करते हैं। Again, this is just, as I said, a base for you guys to say, अच्छा now I can start practicing on making things on my own. बहुत theory होती है, बहुत you know, there are other little things, principles of UI design या principles of UX design. You search for it and you'll find different things. Okay, so this was just a basic visual understanding of it, and I'm sure that you guys understood some principles and you know areas जो इसके ओवरऑल आपके इस चीजों के, इन सब चीजों के अंदर आते हैं। सो गाइज दैट वाज, यू नो, it for the session. You can follow me on these platforms. I would love to have a chat in the future, and
That was it. That was my session. Thank you. Thank you so much. Let me try and bring my camera back because I'm having some issues. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Actually, it was a beautiful explanation in a very interesting and very creative manner, and also with some practical implementations are there as well. So, yeah. I mean, moving to the questions. If anyone having any doubts and queries regarding this, Yeah. can put some I really can't hear you, man. or you can also turn on your microphone and ask directly to sir as well. Yeah. So we have a question from Ranjan. I'm an undergraduate in left studies for the past 3 years and has been working on my business and have successfully grown in that. But for the past 6 months, I have been learning UI UX and kindly help me how to land jobs and as everyone asking for 1 or 2 years of For experience. some reason, I can't hear you. I'm not sure if you can hear me. Yes, sir, I can hear you. Okay, I think chat में डाल दो जो भी कहना है, I guess, because I'm having trouble listening to you from my end, even though I'm connected. Okay, am I not audible, sir? Awesome, awesome. Okay, I think we can have a little Q&A session with everyone. जो भी questions थे, you can, Okay. you know, put in. I can't hear Pratyush for some reason, guys. So थोड़ा coordination में there might be some issues. So, okay. Let me try. Sir, can you hear me? I think I can't hear anyone. It might be an issue with the Google Meet no or problem. something. So there are questions. Just give me a second. Let me try and change some things around. Okay. Yeah. Microphone. Allow. Okay, till then, I will request everyone to please put up your questions in the chat box. Just hold on, guys. I'm just logging in from my phone. Yes, sir. Sure. Yeah. It was some weird. So voice is not audible actually. Yeah. Yeah, no. I'm back on my phone. Yeah. I don't know, some issue with my browser on the. Yeah, sir. It's fine, Anyway. sir. Okay, sir. So there is a question in the chat box by Gokul. He has been working for the past 3 years and in that business and has successfully grown in that. But for the last 6 months, he has been learning UI UX and kindly help me to please land jobs for asking, as everyone asking for 1 or 2 years of experience for entry in jobs as well. And also, I want to learn more in deep in UI UX. So, okay, can you help in that? Yeah. Sir, actually not audible. That's an interesting question, because it'll help everyone to kind of understand what's the space like.
So first of all, I think it's always good to get a good first kickstart, which is your first opportunity, you know. And oftentimes we undervalue a lot of opportunities. We're like, oh, हमारे ego hurt हो रहा है यार, ये ऐसा opportunity नहीं चाहिए, मैं बढ़िया salary चाहिए, बढ़िया ये चाहिए, बढ़िया. So sometimes क्या होता है कि we like, okay, are we lacking in our experience? Are we lacking in the areas, in certain areas जहाँ पे we could work on? If you think there are areas you can work on, or you want to penetrate into the market, I'd suggest, especially while you're learning, because while you're learning, you're not expecting too much. You're not like, okay, I'll become a top-level UI designer tomorrow, you know. So when you're learning, you're not expecting, that's the best place. So when you're doing that, go for internships. Low-paid internships are also cool. You can do an unpaid internship, but make sure that it's actually valuable. बाहर से किसी से पूछ लो, internship यहाँ पे कैसे होती है, things like that. Get an insider knowledge of internship. Otherwise, free internship में आपको चाय कॉफी बनाने को बोल सकते हैं. So it's best that you look at any internship as a good kickstarter, especially if it is paid or if it has actual value. Some good internships I can even name out of my mind, Abhi, of people who have been in touch with for the past few years, or who I've seen grow also. I did a little session on, I think, my IG a while back with Rahul Goradia, who was a UX designer, product designer at Zomato. He got into Zomato through Zomato's internship. So it's a win-win for him. So I think an internship can always convert into a full-time job, can always convert into more things coming from other people, okay, will you, we saw your post on LinkedIn that you're now up with your internship at this place. We have an opening here. Would you like to join? 𝐂𝐿. So a good Kickstarter is always it's also good for your LinkedIn profile, So anything that's good for your LinkedIn profile is good for your career. So take it like that. Yes, sir. Okay. So the next question is, hello, sir, from Adiba Nair, and she wanted to ask that what are the things and the points should we need to keep in mind while doing a UX research for any project, and what kind of strategy should we follow for this? Okay. So UX research, first of all, you have to understand whether you're going for a more qualitative or quantitative approach. These are the main categories of research that we can look at. Quantitative is great if you already have some good numbers. मतलब कि आपका website चल रही है, you want to refine the website a little more, maybe increase sales. Your aim is to increase sales. That's your metric. So if you want to increase sales, you will have to look at first your quantitative, your quantities, your, okay, these many people are coming onto the website and these many people are actually purchasing something, conversion rates and things like that. So when you're doing research, you're also researching into why users are buying something, how many users are buying something, how many are clicking on this button. These quantitative measures are done, or things that can be identified in true numbers, in percentages, things like that. But for example, you can even do qualitative research in the sense that qualitative research is more emotional. If you're making, for example, Ferns and Petals is a site or a application where you can buy flowers for your loved ones or cakes for your loved ones, things like that. So Ferns and Petals would love to look at how the users are feeling when they're buying something, rather than, दिवाली आ रही है तो दिवाली में तो लोग खरीदते हैं, भाई क्यों खरीदते हैं, क्या इमोशन है, या क्रिसमस आ रहा है तो क्यों, क्या इमोशन है, कि अपने बच्चों के लिए लेंगे तो अगर क्रिसमस है तो बच्चों वाले आइटम ज्यादा दिखाएंगे, अगर दिवाली है तो दिवाली रिलेटेड, राखी आ रही है, अब राखी के एड्स आप हर जगह देख रहे हो, उसमें वो बहन भाई का इमोशन दिखाते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं दिखाते. सो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है लोगों की, वो क्वालिटीज देखते हैं, वो इमोशंस देखते हैं. So research में भी वो चीज होती है कि we look at, okay, user is getting angry when he's reaching the screen, ऐसा भी होता है. So understanding first is कि किस तरीके की रिसर्च करनी है, then having a good strategy of how to do the research. 5
steps in that research, but how do you prioritize those things? Priority is very important. मान लेते हैं बहुत लोग हमारे पास तो यूजर्स ही नहीं है, क्या करेंगे? डेटा यूजर फैमिली जो हो सकता है वो एप्लीकेशन फ्यूचर में यूज कर सके, ठीक है? अगर आप कोई फूड ऑर्डरिंग ऐप बना रहे हो तो आपके दोस्त भी तो फूड ऑर्डरिंग ऐप यूज करते हैं, उनसे पूछो. सो हैविंग अ डिसेंट ऑडियंस, इवन 5-6 रियल पीपल इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद जो आप रिसर्च स्ट्रक्चर करते हो, प्लान करते हो, दैट comes out to be more effective and efficient because there are real people who might really use your application. बहुत सारे startups, what they do is they bring real users who will use it in the future. बहुत startups क्या करते हैं, वो 10 लोगों को बोलते हैं ये ऐप आ रहा है, आप यूज करोगे, हमारे लिए यूज करो, we will give you this. Okay, get 500 rupees coupon for doing this research और this form भरोगे तो ये होगा. वो फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? क्योंकि they're doing either qualitative or quantitative research. So, filling out forms, creating the right kind of interviews to actually do it with users, creating the right questions is very important. हर चीज करो, but with a good audience, good aim and goal कि अच्छा से निकलेगा क्या भाई, and with the right kind of incentive कि where will this go into? Is this going into my marketing? Is this going into my user research? Is this going into my, will this change something in my application, website? So these things are necessary and then you can structure out, structure तो आपको Google करके मिल जाएगा. But ये सारी चीजें पहले समझ लोगे तो it will be better for you. Yeah, actually, true, sir. So moving forward to the next question from Krish. What are the skill sets that a recruiter expects other than from the projects and from a UI/UX designer applying for a product-based company? So what are the basic skill sets they expect from the candidate? Who's asked this question? So Krish Chopra. Krish, awesome question, dude. This is a question which will help you understand कि क्या चीजें हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए. एक चेकलिस्ट बनाने में मदद करेगा. So good checklist will have things like one is, does my portfolio have good quality projects or not? बहुत लोग पूछते हैं कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. अगर आपका एक प्रोजेक्ट इतना बढ़िया है कि वो रिक्रूटर देख के कह रहा है वाह तो मस्त बंदा है, इसको बुलाना चाहिए, दैट इज द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो यू शुड क्रिएट. ये नहीं कि आपके पास 15-20 हैं और 15-20 में उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, क्या बना है, ठीक है. ऑल्सो फोकस ऑन ईच केस स्टडी. पोर्टफोलियो सुंदर लगे ना लगे, उसको आप पीडीएफ भेज दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मोर देन दैट इट्स केस स्टडी. व्हाट having an understanding of what are the user's needs, pain points, requirements, what are my goals as a user researcher or user experience designer, whatever, what was my role, तो role भी define हो जाएगा. and ये problem है, ये solution, ये नहीं कि ये problem है, problem कितनी बड़ी मैंने research की, फिर ये solution है, फिर इतनी बड़ी नहीं. उसे आप पहले ही बता दो what is he going into. A lot of people what they do is इतना बड़ा बनाते हैं, नीचे होता है एकदम नीचे. वो गलती मत करो. जब हम कोई वीडियो भी देख रहे होते हैं आजकल यूट्यूब पे तो एक छोटा सा समरी आ जाता है कि ये होने वाला, तो पीपल गेट इंटरेस्टेड. ये आई डोंट नो हु सेड दिस, some other UX designer, Ansh Mehra said this in one of his YouTube videos or something. He was like आजकल YouTube पे बहुत लोग एक छोटी समरी डाल दे रहे हैं अपनी फुल वीडियो की, या कोई शॉकिंग मोमेंट दिखा रहे हैं, सरप्राइजिंग मोमेंट दिखा रहे हैं, और उससे लोग इंटरेस्ट बिल्ड होता है. तो इंटरेस्ट बिल्ड करो, ये मार्केटिंग टेक्निक समझो. इफ यू कैन मार्केट योरसेल्फ वेल ना, आपका पोर्टफोलियो सब पार भी रहेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाएगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Another thing recruiter will look at is your social media. Don't treat your social media के अरे यार मैं अपना ट्रैवल का हिस्ट्री दिखा दूंगा, उसे इम्प्रेस हो जाएगा. नहीं, कोई ऐसा सोशल मीडिया साइड में बना लो यार, अपना एक सोशल मीडिया आइडेंटिटी बना लो जिससे आपका करियर रिलेटेड चीजें भी हो. जैसे कि आप लिंक्डइन बनाते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लिंक्डइन विल चेक आउट.
कि बंदा कर क्या रहा है. If you're posting, for example, when I started off on YouTube, I think I had like 1,000 subs or something. I was getting actual recruiters messaging me saying कि उस टाइम मैं full time job करता था. तो उस टाइम they were like, hey, we saw your YouTube video, we got interested in your work. Your work looks interesting. Do you want to come in for an interview? भाई YouTube से भी रिक्रूटर आता ही है, तो नहीं पता था. सो ये आपका जो एक्टिविटी रहता है, आप इट शोकेसेस योर स्किल्स. इफ इट शोकेसेस योर स्किल्स, पीपल विल गेट टू यू. सो कुछ भी स्टार्ट कर दो. इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, कुछ भी स्टार्ट करो. बिहाइंड ट्विटर, कहीं ट्विटर पे तो आजकल यार जॉब हंटर्स ऐसे देखते हैं ट्विटर पे, किसने डाला है रिक्रूटमेंट के लिए, दे आर लुकिंग फॉर समबडी, एकदम. और मतलब वहां पे तो एकदम चिल एनवायरनमेंट है ना, तो कुछ ऐसा वो नहीं है कि साला रिज्यूमे भेजना पड़ेगा, ये भेजना पड़ेगा. वहां पे बात चालू हो जाती है, रिक्रूटमेंट हो जाती है. सो वेरी न्यू वेज ऑफ अप्रोचिंग पीपल और गेटिंग अप्रोच्ड. Look at that also. And one last thing I'd say about recruitment is, on what recruiters look at is, a recruiter will almost always look at your what do you call your definition of what you do. So a lot of people, what they say is, अपने portfolio या website पे या कहीं पे भी वो अपना एक ऐसा एक छोटा सा one liner लिखते हैं, but वो कई बार it gets it wrong. मैंने actual recruiters को reject करते हुए देखा है, just because क्योंकि मैंने भी की है recruitment. पेयू में हम करते थे hiring drives वगैरह, Magic Bricks में भी करते थे. So वहाँ पे literally we have rejected people just because उनकी website, जो portfolio website थी, उसमें इतना लंबा सा उसने अपना बता रखा है what I do, like जैसे होता है ना कि I am a this, ठीक है. अब वो I am a this can have such a huge impact. Make sure you know what is your task and what you are eager to do. Agar if I'm a guy who loves interaction design, I'll say I'm a UI designer who creates wonderful experiences through expertise in interaction design or expertise in motion design. अगर ज़्यादा वो motion की तरफ या micro interactions की तरफ है. So हो गया ना, बता दिया उसने क्या स्पेशल है उसके बारे में. तो अब रिक्रूटर कहेगा अच्छा ये इंटरैक्शन डिजाइन भी करता है, वो अब जाके देखते हैं इसका. बट आपने लिख दिया था आई एम अ 21-year-old प्रोडक्ट डिजाइनर फ्रॉम दिल्ली. भाई वो तो सब लिखते हैं, क्या डिफरेंस है. तो ये हम देखते थे एंड हम भी लिख देंगे आई एम अ 25-year-old डिजाइन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम दिल्ली. और सभी लिखते हैं एंटरप्रेन्योर, तो सबके टैगलाइन में होता है आजकल. वही है कि is it boring? Is it making people more interesting? That's very important. Is your identity doing that? So ये I think बहुत unique चीजें हैं जो आप focus कर सकते हो, जो बाकी शायद लोग ना focus करें. So basically मतलब highlighting your qualities is very important. Very, very important. Yeah. So next question is from Ayushi Jha. Hello sir. The explanation was really amazing, and she's been working from a UX design from a year now, and she wanted to know if she get the review of her project that she is currently working on. Actually मैं YouTube पे सोच रहा था एक अच्छा रिव्यू करने के लिए, या फिर fixing your UI design mistakes वाला kind of series करने के लिए. तो I think connect to me on Instagram. वहाँ पे I'll be doing a story. Once I do that story, submit your stuff. And I'll do something live. Generally, I don't really always have the time to kind of review everyone's portfolios because lamba hota hai process. But definitely, that's something that's very very unique. And in the future, who knows, my design school might be doing something like that, just reviewing people's. So just stay connected with me. I'll be doing such things. मैं बीच-बीच में करता भी हूँ. People who know me. Some people might be here who already follow me. They know कि मैं बीच-बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता रहता हूँ. So I'm sure your portfolio will come up, and I'll remember your name and I'll get to you for sure. Okay. Thank you, sure. And the next question from Kunjal Ramte. So if I know Figma and doing some basic projects like neomorphism, glass morphism, so what is the next steps for doing those things?
तो ये तो जब हम स्विमिंग सीखते हैं ना पहले, तो हम पानी में छप छप जरूर करते हैं, ठीक है। ऐसे डाइव मारना, गलत डाइव मारेंगे, ऐसे उलट पुलट के डाइव मारना बहुत मजा आता है करने में, बट वो चीजें करके स्टेट लेवल स्विमर नहीं बन सकते आप, या फिर तो ये वो तो शुरू में इट्स वेरी फन टू डू इट, these glass morphism, neomorphism, learning Figma, it's fun, it's visual, it's nice, it's interesting. But एक चीज जो मैंने देखी है जो करना चाहिए is learning everything from the basics, in the sense कि एक UI designer को भी UX के principles and everything people should understand that, so learn about the principles of UX design. आप search करोगे principles UX design, आपको आ जाएगा. Learn about the design thinking process. Learn about various problem solving methods in design. Learn about sprints, design sprints, things like that. ये टेक्निकल चीजें आप सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि अब आपको मजा आ रहा है यूआई में. अब आप जब जैसे आज हमने किया वो थोड़ा कुछ हमने टेक्निकल चीजें भी देखी, विजुअली इजी टू लर्न, बट उसके टेक्निकल साइड्स भी देखो. लुक एट take a small free course on typography. बहुत सारे Udemy या ऐसे YouTube हर जगह मिल जाएंगे free course on typography. अगर आप UI डिजाइन में इंटरेस्टेड हो तो, और विजुअल डिजाइन में इंटरेस्टेड हो, तो ये सारी चीजें काम होंगी. So now start learning theories. Now start learning processes and structures and systems. अब आपको मजा आ गया, मजा ले लिया आपने, अब एक्चुअली छप कर लिया, अब लाप्स लेना स्टार्ट करो. That's the whole concept. So now get into that, and I'm sure you'll have a great journey ahead. But remember कि ये जो stage है, ये छप वाला है, वो वाला थोड़ा serious भी होगा, but मजा भी आएगा क्योंकि you're already interested in that area, Actually, sir. And so the next question from Rimjim Kasira. So she wanted to know that we establish a balance between color of a brand identity and the psychology behind the colors, like you said. Red suggests warning, but Coca-Cola has it is their brand color. So how to deal with that while designing? Like you said also that cross implements for a wrong decision or and right implements to a tick symbol. So how to make it? Great question. Now जब हम देखते हैं वो दो एरियाज हैं, कलर थ्योरी अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको कलर के इतने वो डेफिनेशंस मिल जाएंगे ऑफ डिफरेंट, हाउ डू वी लुक एट डिफरेंट कलर्स सेपरेटली, या ब्रांड के कलर क्यों ऐसे होते हैं, रेड क्यों है. अब कोका कोला कोई दे डोंट वांट टू शो कि खराब चीज है, इवन तो होती तो खराब है, बट दे डोंट वांट टू शो खराब चीज है. सो if they don't want to show if it's a rotten thing, why did they choose a red color? Now there is a whole chart आपको मिल जाएगी, किसी भी गूगल पे ही मिल जाएगा, ऑफ कलर साइकोलॉजी. उसमें आपको दिखेगा okay, this color has these kind of emotions. अब red एक warning emotion भी होता है, so it's a negative emotion, but red will have other definitions to it also. Red is which is more bold, red or green? एकदम से, मतलब ये साइकोलॉजी का भी छोड़ो, ये ज्यादा विजुअल है, विजुअल साइकोलॉजी है. रेड, अगर आप एक बड़ा सा रेड बटन है और एक बड़ा सा ग्रीन बटन है, आपका you will go towards a more positive thing, तो why is that? तो रेड जो चीज होती है, it generally defines something which is a little more bold, and Coca-Cola wants to say okay, we are bold, एकदम पी के एकदम कुछ लगता है अंदर, कैफीन है अंदर. अब वो ग्रीन कर देंगे, बोलोगे यार अच्छा ये कोई हेल्थ ड्रिंक है. अब ग्रीन तो हेल्थ, green is also linked to health. Okay, so if a company wants to link itself to a healthy thing, Starbucks actually calls itself a healthy chain of cafes. In fact, they were trying to get more healthy. अगर आप कहीं भी किसी फॉरेन कंट्री में स्टारबक्स जाते हो, उनके पास एक वीगन मेन्यू होता है. अब इंडिया में भी आ गया वो वीगन मेन्यू. तो they are trying to say okay, we're healthy. You have things here which are healthy. वहाँ पे आपको वो आइसक्रीम केक्स नहीं बेच रहे हैं कि अच्छा एकदम चीनी भरो आपको खाने का मन करे. नहीं, बास्किन रॉबिन्स का पिंक और ब्लू है. इट्स मोर प्लेफुल, इट्स मोर कैंडी बच्चे होते हैं ना, बच्चे किड्स वांट कैंडी, तो पिंक एंड ब्लू, इट्स अ वेरी कैंडी शेड ऑफ पिंक एंड ब्लू. सो
every color evokes different kinds of emotions. Okay, अब जैसे मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं क्योंकि नंबर वंबर दिख जाएगा, पर जैसे ये डेबिट कार्ड है, ये भी तो लाल है, तो मैं क्या स्वाइप करना बंद कर दूं? तो वो ये कि एक कलर जो है वो अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई करता है. रेड इज जनरली अ लिटिल मोर बोल्ड. अब मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे वो चार्ट एकदम वो याद नहीं है कि वो चार्ट में क्या क्या इमोशंस लिखे हैं. Actually, मेरा कंप्यूटर सामने है. Let me open up and show you a little chart real quick in a second. वही चार्ट आप पढ़ लोगे तो आपको एकदम से समझ आ जाएगा. कलर साइकोलॉजी, ठीक है. सो ये रहा आपका छोटा सा, ये थोड़ा ज्यादा ग्राफिक चार्ट है बट आप समझ जाओगे आई थिंक. ओके, ये आपके यहाँ पे ब्रांड्स आ गए. अब आपको दिख रहा है एक्साइटमेंट बोल्ड रेड में, यूथफुल. अब ब्रांड्स वार्निंग वाले ब्रांड्स नहीं है ऐसा कोई भी इनमें से, क्योंकि वार्निंग वाला तो कोई ब्रांड शायद होता भी नहीं है. तो वही है कि रेड अपार्ट फ्रॉम वार्निंग इट आइडेंटिफाइज दीज फीलिंग्स. तो वार्निंग एक फीलिंग नहीं होती. वार्निंग तो एक आपको बोल रहा है वार्निंग वार्निंग रुक जाओ. फीलिंग होती है बीइंग स्कैर्ड और being panicky. Those are the feelings when you get something warning आती है. But ये जो रेड है ये जनरली आपको ऐसे बोल्ड चीजों के साथ, जैसे ये टारगेट है, आपका लेगो है, CNN, कोका कोला जैसे आपने बोला, केलॉग्स है, निंटेंडो है माय फेवरेट. ये सारी चीजें आपका रेड में है. कोई येलो भी तो आपका वो होता है ना, एक तरीके से वार्निंग या फिर एक एरर हो सकता है. तो इसमें ऑप्टिमिज्म है, क्लैरिटी है, वार्मथ है, निकॉन का है, IMDb का है, बेस्ट बाय का है, फैंटा है, ऑरेंज. अच्छा ये ऑरेंज हो गया आपका फ्रेंडली. कोई ऑप्टिमिस्ट, ये क्लोज है ऑप्टिमिज्म फ्रेंडली. ये बीच का कलर होता तो दोनों ही होता. सो इट्स लाइक एवरी कलर, even though it has a different identity on screen sometimes, but it will have something else when it connects to a name or a logo. That is, a logo design is very different from a UI design in general. So ये आपका एग्जाम्पल हो गया टू व्हाट दीज आर. मुझे एकदम याद नहीं रहता बट हाँ, ग्रीन यहाँ पे लिखा है हेल्थ. सो हेल्दी चीजों से रिलेटेड ग्रीन हो गया. So these are different emotions that come into our mind. If it is connected to a logo, it does not mean a warning. But if it connects to like a cross, that will not be a positive thing, because now you have two things saying it's a warning. तो अब वो कोई भी लोगो ऐसा नहीं दिखेगा जो क्रॉस है, जो रेड है. अब वो अरमानी एक्सचेंज का क्रॉस वो ब्लैक में लिखते हैं, वो रेड में थोड़ी नहीं लिखते हैं. तो वही है कि सिंपल थिंग, emotions, different emotions, one color can do like 5-10 emotions. So it depends what it is being used with. This red t-shirt doesn't mean कि लोग मुझसे भाग जाएंगे. So that's the whole thing. True, sir. Nicely explained, sir. Thank you. And so, next question from Shaurya Arora. What's your thought on AI will take away UI UX jobs? Hey, controversial stuff. So, actually, I want to make a video on this. I've done 1 or 2 videos in the past, but this time there is a tool called, in fact, a lot of people might not know about this, 𝐂𝐈 करके है. मैंने कई जगहों पे खुद भी बोला है, कई डिजाइनर्स ने बोला है. 𝐂𝐈 अगर आप जाते हो, what it does is आपका sketched out wireframe उस पे अपलोड कर दो ना, तो वो पूरा फाइनल UI बना के दे देता है आपको. बटन्स, सर्च, इमेजेस, सब कुछ अपने हिसाब से बना देता है. फिर आप उसको ट्वीक कर सकते हो इन 1 क्लिक. अगर आपके पास कोई ब्रांड, आपका ब्रांड का लोगो है, वो लोगो लगा दो, हर जगह कलर अप्लाई कर देगा. अरे फिर UI डिजाइनर की क्या जरूरत है? सो UI डिजाइनर, सी, AI कैन रिप्लेस एनीथिंग. AI कैन रिप्लेस मी राइट नाउ टॉकिंग. आप ये गूगल को पूछ के देखो, ये डेफिनेशन सारे बता देगा. बट इट कैन नॉट replace human intuition. It cannot replace human creativity and thought process. For AI, everything is numbers, data, and some sort of algorithm created by humans.
for that that's it. उसके आगे कुछ नहीं है. हम जब कहते हैं मशीन लर्निंग, अरे वो सीख कुछ नहीं रही है, वो बस इनपुट ले रही है, उसको लिटरली ऐसे ब्लॉक्स ऑफ आइटम्स में डाल रही है, देख रही है हर चीज की कैटेगरी क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो हर चीज बस नंबर्स, कैटेगरीज, ये सब चीजों में देख रही है. यू नो, अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ते हो, मैं कोई मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे तो आधी चीज नहीं पता, बट मशीन लर्निंग अगर आप एक लाइन भी पढ़ोगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मशीन लर्निंग में इट्स जस्ट लर्निंग बेस्ड ऑन व्हाट वी आर फीडिंग इट एज वेल एज व्हाट वी आर सेइंग कि ऐसे सीखना है. सो अगर आप बच्चे को बोल दोगे ऐसे ऐसे दौड़ना है, वो दौड़ लेगा, बट वो यूसेन बोल्ट तो नहीं बन जाएगा ना उससे. तो वही है कि AI कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ईज आवर जॉब्स, एंड हो सकता है फ्यूचर में बहुत सारे लोग देखे. नो कोड इज नॉट AI. Webflow, my business's first website was made by me completely overnight on Webflow. मैं बैठा, एक रात बैठा, मैं कहा ये सब चीजें बना देते हैं, टेम्पलेट्स चिपकाएं, बटन लगाएं, ट्वीट्स किए और बन गया. Why would I hire a Webflow developer for it? बट मुझे मालूम है कि अरे बॉस, मेरी वेबसाइट ग्रो हो रही है, मुझे ये चीजें इंप्रूव करानी है, CMS लगवाना है, सब कुछ करवाना है, तो मुझे एक बंदा चाहिए जो सब कुछ स्मूथली कर दे और जो मैं विजन कर रहा हूँ मेरे बिना हजारों घंटे लगाए वो कर सके. वो एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग कर सकता है. AI से बात करके देखो यार, वो जो AI रोबोट आया था, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट AI रोबोट, दुबई वगैरह में भी प्रेजेंटेशन हुई उसकी, बहुत Sophia. सेलिब्रिटीज के साथ. सोफिया, या द वन विद द ब्रेन इन हर हेड एंड स्टफ लाइक दैट. तो वही है कि सोफिया से बात करके देखो, यू फील वेरी ऑकवर्ड, वियर्ड कि क्या हो रहा है, यू नो, लाइक इट वोंट फील नेचुरल. सो जब ह्यूमन इंटरेक्शन बात आती है, रोबोट्स ऑन AI robot, whatever you want to call it, nowhere close to it. There needs to be like 20-30 years of development जिससे पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर भी दे सकें. Yes, sir. So, moving forward to the next question from Prabhat Sharma. He's asking, a lot of people have started to ये become लास्ट क्वेश्चन करते हैं प्रत्युष, है ना? Okay, sir, sure. Okay. Sir, a lot of people have started to become a UX designer in India. So, I want to ask how to differentiate from all the people and become a better UX designer from others. I'm glad someone really asked this question because this is a very underrated question. Differentiation will, there are three advantages. One, एक तो आपका लोग आपको, they put you first because they know you're more valuable. Second, you feel good because you know you're original. You know, there's a psychology behind being original and feeling original. Third is you get a lot of praise for people because you seem special in their eyes, even though you might be doing something very basic. Okay, so first thing to differentiate, मैंने ये बार-बार कहा है लोगों को जो कई बार फोकस नहीं भी करते भी हैं तो भूल जाते हैं, is look at parallel skills. And what I define as parallel skills, ये मैंने अपनी definition बनाएंगे. A parallel skill is something that you can do besides your actual job description that will bring value to your actual job description. So मान लेते हैं आप UI डिजाइनर हो, ठीक है, बट आप बहुत बढ़िया माइक्रो इंटरैक्शंस बनाते हो, बहुत मतलब ऐसे बनाते हो कि डेवलपर बस 2 मिनट में एनिमेट करेगा और बढ़िया सेट हो जाएगा, और कोई नहीं बनाता और सबको पता ही नहीं अच्छे से माइक्रो इंटरैक्शंस कैसे बनाते हैं, टूल्स कैसे यूज करते हैं. ये तो सिंपल सी चीज है, बहुत छोटी चीज है यार, यूट्यूब से 2 मिनट में सीख जाएगा, बट एकदम से आपके रिक्रूटर के सामने, आपके मैनेजर के सामने, जो भी है, आप एक स्पेशल स्किल वाले बंदे बन जाते हो. इसके पास जाओ यार सीखने के लिए. वो बंदा मैं था बाय द वे. जब कंपनीज में जाता था तो मेरा क्या होता था, अरे यार इसको एनिमेट कैसे करना है, हमसे बता दे यार, ये लॉटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कैसे करें. तो क्योंकि मेरे पास वो एक्स्ट्रा ऐसे पैरेलल स्किल्स थी जो जरूरत नहीं थी जॉब के टाइम पे, बट जो एक एडेड बोनस बन के आई, तो मेरा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वो एकदम से बन गया. दूसरी चीज है कम्युनिकेशन. अगर मैं कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाता, आप सब लोग बोर होके
कब के चले जा चुके होते हैं। सो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत बोरिंग है, और नाम तो बिल्कुल नहीं लूंगा, बट डेफिनेटली बहुत बोरिंग है, जो एजुकेशन फील्ड में चले तो आते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश कैसी है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो एकदम ऐसे बात कर रहा हूँ, खुल के बढ़िया से आपके साथ कनेक्ट करके, एकदम ऐसे, हाँ जी भैया, हाँ ये तो ये यूएक्स डिजाइन ऐसे होता है, तो आप बोर होकर भाग जाते हैं। सो यू हैव टू बी इंटरेस्टिंग जस्ट बाय द वे यू कम्युनिकेट, बी इट एनी लैंग्वेज, बी इट एनी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। आपका कोई एक्सेंट है, फिर भी आप you can be, I know so many people who have a very either a very Punjabi accent you can make out immediately, especially Punjabis can make out immediately, and it can be a turn off for a lot of people, but the way they speak, some people speak confidently, they know their thing, they can speak fluent English. When they switch from their Punjabi accent to their English, you're like, oh man, this is like some other guy. So वो interesting है, वो बंदा interesting है just by the way he speaks and talks and accepts himself. So a lot of people try to, अरे हम English में बात करेंगे तो हम professional लगेंगे. No man, it really doesn't happen that way. If you can confidently and in a very nice, suave manner speak in Hindi, full mind. सबको हिंदी आती है इंडिया में, except if you go to the south, तब तो English सीखते हैं. But if you're anywhere central to north, you'll have a good time just knowing Hindi. So whatever language you have, get a good communication and you'll see a lot of change in your career. So I think ये दो तीन चीजें जो मुझे लगती हैं बहुत underrated हैं. Exactly, true, sir. So, okay. Now, so that's all for today, sir. And thank you so much for your words of wisdom. And actually, it was a really good session, honestly. And the beautiful explanation by you in every manner, in a very creative and interesting manner, and with the real-time implementation in the Figma as well. So overall, it was a great session, honestly, sir. And it will be a great pleasure for us if we will listen to you again in the future events as well. So thank you so much, sir, again. Of course, I came, last time also I came. I think you guys had some other event. I'm not sure, but I'm not sure who organized that. But that was a lot of fun too. You guys do a great job with whatever resources you have at the time. You always do a great job. So kudos to you guys for that. And would love to come again. Thank you all for sitting patiently and listening. And hopefully I gave you a little bit of value today. Yes, definitely, sure. So now I would request everyone to please turn on their cameras for a memorable screenshot. हाँ यार, मुझे भी मैसेज कर देना. Love to share it on IG. Yes, sir, sure. Okay, I guess it's done. And now I would like to call Ankit, our Vice President of CSI BIT-Durg Student Chapter. Ankit. Thank you so much, sir, for accepting our request at the very first time. It was a pleasure to have you with us, and it was pleasure listening to you. Definitely, every UI/UX developer present in the meet will get a good help from this session. Thank you for your time, and thank you to the team who made this event so successful, and thank you to the audience for your time. Thank you so much for joining us. The feedback form link is given in the chat box. Kindly fill the feedback form. Links of the both CSI and Puneet sir is been given in the form. Do follow CSI and do follow Puneet sir for further updates. Thank you everyone for joining. Thank you, sir. Thank you guys for inviting me once again. Thank you for hosting me. Have a wonderful day ahead. Thank you, sir. Thank you, sir. Also, I would like to thank our professor in charge of club, Monica Verma ma'am, and also everyone present here for making this session worthwhile. So thank you so much, guys. See you in the next session. Take care.